Hello everyone and students, welcome back to my channel. Today we will discuss about the beta oxidation. And beta oxidation is the process of oxidation in which fatty acid gets metabolized or fatty acid breakdowns in the form of ATP. So this is the structure of fatty acid. What are the fatty acids? Fatty acids are the long hydrocarbon chain with one functional group, carboxylic acid, at its terminal. So here and this fatty acid is finally converted into acetyl coenzyme A. Likewise, if fatty acid is of 16 carbon, for example, palmitate या palmitic acid. If fatty acid is of 16 carbon, then how many acetyl coenzymes will produce it? It will produce 8 acetyl coenzyme A. Means in each round one molecule of acetyl coenzyme is released. In beta oxidation, first of all, activation of fatty acid takes place. First of all, activation means fatty acid activate होते हैं. Then transport of activated fatty acid into mitochondrial matrix. Okay, then beta pathway, it's beta oxidation pathway happens. Okay, in beta oxidation there are 4 reactions. First, oxidation. Second, hydration. Third, again oxidation. And fourth, thiolysis. So, and this cycle is repeated how many times? Until all the fatty acid chain gets degraded into acetyl coenzyme A. So this whole process, these 4 steps repeated. Now we will discuss about the first step, that is activation of the fatty acid. Here fatty acid is activated by forming a thioester link with coenzyme A, and this reaction is catalyzed by, acyl coenzyme A synthase. This is fatty acid. This is molecule of ATP utilized. This is thioester. And here this fatty acid forms a thioester link with coenzyme A, and this is now called
acyl coenzyme A with production of this adenosine monophosphate and phosphate group. This is also called fatty acid thiokinase, and this enzyme is found. Where this enzyme is found? This enzyme is found in outer membrane of the mitochondria. So, fatty acid activation. Fatty acid is activated by forming a thioester link with coenzyme A with the use of a ATP. In the presence of enzyme called acyl coenzyme A, acyl coenzyme A synthase. This enzyme is also called fatty acid thiokinase. Here, this formation of the acyl coenzyme A occurs with the release of this AMP and phosphate. Now, step 2 is the transport of fatty acid into the mitochondrial matrix. So, this diagram shows how the acyl coenzyme or fatty acid transported into the from the cytoplasm to where? In the matrix of the mitochondria. So here, first of all, as in step 1, fatty acid is activated and converted into acyl coenzyme A. Now, this, since inner mitochondrial membrane is not permeable to long chain fatty acids, so they require a transport mechanism. This is a little bit complicated, but not as much. See, in simpler way we can say that कि एसिल कोएंजाइम जो एक्टिवेशन फैटी एसिड और एक्टिवेशन के बाद एसिल कोएंजाइम में बना. एसिल कोएंजाइम क्या होता है? जो कोएंजाइम ग्रुप होता है एसिल फैटी एसिड का, वो रिप्लेस हो जाता है कार्निटीन से, ठीक है, और बन जाता है हमारा एसिल कार्निटीन. अब क्या होता है? ये एसिल कार्निटीन ट्रांसलोकेट्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ये मैट्रिक्स में पहुंचता है, और यहाँ पे अगेन ये कार्निटीन रिलीज हो जाती है और दिस कोएंजाइम ए ग्रुप फैटी एसिड के साथ फिर से बाइंड हो जाता है और हमारा एसिल कोएंजाइम हमें मिल जाता है, और ये कार्निटीन वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाता है. और इन दोनों एंजाइम्स, इन दोनों रिएक्शंस को कैटालाइज कौन करते हैं? 2 एंजाइम्स होते हैं, कार्निटीन एसिल ट्रांसफेरेज 1 जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के आउटर फेस पे होता है, और कार्निटीन एसिल ट्रांसफेरेज 2 जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के इनर फेस पे होता है. नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन. देयर इज 4 reactions in the beta oxidation. First is oxidation, second is hydration, third is again oxidation, fourth is the thiolysis. So why it is called beta oxidation? See, this is acyl coenzyme, this is the fatty acid, this is coenzyme group. Here this is the carbon which attached with functional, which is after the functional group, that is carboxylic acid, is alpha carbon, then beta carbon and then gamma. Now this acyl coenzyme is converted into trans-enoyl coenzyme A, and here the oxidation of the alpha carbon and beta carbon, in between the bond is present, oxidation occur here. So here removal of the hydrogen ion and formation of the what? Formation of the double bond. ठीक है? Again all the reactions occurs between these alpha and beta carbon. Now H2O is added, process is हाइड्रेशन. H2O यहाँ ऐड हुआ और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन.
और एंजाइम कौन सा यूज होता है, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज। एंजाइम्स अक्सर जो नॉमेनक्लेचर होता है एंजाइम का, वो जो रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये यहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है, सो इट इज हाइड्रेटेज। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दैट्स वाई इट इज डीहाइड्रोजिनेज। ओके, सो हियर हाइड्रोजन इज अगेन added at the water molecule is added at the alpha and beta carbon. See, this is alpha and this is beta. So here this OH is added here and H is added here. The double bond is converted into single bond. Now again hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase means again the oxidation occurs. The third process is oxidation, and again dehydrogenase means removal of the hydrogen. Now here again hydrogen is removed from where? Here, from this beta carbon. This is beta, this is alpha. Okay, so here hydrogen is removed from the beta carbon and compound is 3-keto-acyl coenzyme A. Now addition of the coenzyme A group by the enzyme beta ketothiolase. Here again a thioester bond is forming, so it breaks from here and this molecule is acetyl coenzyme and this molecule is again acyl coenzyme A, but this molecule, this fatty acid is shortened by the 2 carbon, means these 2 acetyl coenzyme is removed, their 2 carbon is released from the acid and acyl coenzyme is formed, but in this acyl coenzyme there is shortened by, means 2 molecule of carbon is less, and so again this acyl coenzyme is again the same process is repeated with this acyl coenzyme. ठीक है, तो ये साइकिल फिर से रिपीट करेगी और तब तक रिपीट करेगी जब तक कि पूरी फैटी एसिड चेन एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो अगर 16 कार्बन की फैटी एसिड है तो ये कितने 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए देगा। ओके, कितना, अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो इसमें 8 एसिटिल कोएंजाइम मिलेंगे और कितने साइकिल होंगे, 7 साइकिल्स, बिकॉज दिस लास्ट जो 7th साइकिल होगा उसमें हमें लास्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम मिल जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन विच अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड द मेन रिएक्शन इज, मेन बीटा ऑक्सीडेशन का जो मेन रिएक्शन है वो यही 4 स्टेप है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड थायोलिसिस। पहले ऑक्सीडेशन में हमारा कोएंजाइम FADH2 होता है, दूसरे में हमारा NADH होता है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।